dear genius minds. Once again, a very warm welcome to your geography class with your mentor Pranjita. And children, ready to start a new chapter of class 6 geography, that is chapter number 17. Maps are guides. आज क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे मैप्स के बारे में और कैसे ये एक गाइड का काम करते हैं हमारे लिए. Now in this chapter we are going to study about importance of maps. Maps के क्या importance है, then types of maps, कितने तरह के maps होते हैं, components of a map, how to read a map, कैसे read करते हैं map को, then sketch, plan. So very interesting topics here. So please pay attention and here we start the chapter. A map is a drawing representing the whole or a part of earth on a flat surface. Map क्या है? ये एक drawing होता है जो कि represent करता है या तो whole पूरे earth को या उसका कुछ part एक flat surface. Importance of maps. A map is used to study smaller parts of the earth like a continent, country, state, city or village or even a neighborhood or a house. अब ये जो मैप है ये किससे यूज किया जाता है? ये यूज किया जाता है स्मॉलर पार्ट्स ऑफ छोटे-छोटे पार्ट्स अर्थ के स्मॉलर पार्ट्स को स्टडी करने के लिए, जैसे कि कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, विलेज, सिटी, देन कोई नेबरहुड या कोई हाउस. इट कैन बी फोल्डेड और प्रिंटेड ऑन अ बुक. ये बुक में भी प्रिंट किया जा सकता है मैप को और इसको फोल्ड करके भी पेपर को कहीं लेके जा सकता है. The earth is spherical while a map is flat. अर्थ तो स्फेरिकल होता है लेकिन एक मैप जो होता है वो फ्लैट होता है, फिर फ्लैट पेपर पे बनता है. So some details have to be compromised. इससे कुछ डिटेल्स ऐसे हैं जो कि कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, एक्चुअल डिटेल्स नहीं पता चलती. The earliest map is believed to have been made in 2300 BC by Ptolemy and Egyptian. जो पहले जो मैप बना था, अर्लीस्ट मैप, वो ऐसा कहा जाता है कि 2300 BC में टॉलमी एक इजिप्शियन थे, उन्होंने बनाया था. He was the first to make a map on scientific basis and he drew a north line to depict directions for the first time. Now, types of maps. उसे पढ़ने से पहले हम फैक्ट पढ़ते हैं. The art of map making is called cartography. मैप मेकिंग का जो आर्ट है उसे क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी. A book of maps is called an atlas. Children, if you have seen an atlas, एक atlas एक बुक होती है जिसमें कि हर तरह के मैप होते हैं. Now types of maps. Maps are of the following types. अलग अलग तरह के मैप्स कौन से हैं? Physical maps. A physical map shows the natural features of the earth such as oceans, mountains, rivers, plateaus, plains. ये सारे natural features हैं जो कि एक physical map दिखाता है. It is also called a relief map. Next is the political maps. A political map shows the boundaries of countries, states, cities, towns, etc. इनकी boundaries दिखाता है political map. It can include some more information like capitals, rivers, railway lines, roads, etc. कुछ और information भी हो सकती है इस political map में, जैसे कि capitals, rivers, railway lines, इन सब के बारे में, roads. Then comes the thematic maps. Sometimes we need to study a particular feature of a part of the earth. कभी-कभी क्या जरूरत पड़ती है कि कोई एक पर्टिकुलर फीचर किसी भी अर्थ के किसी भी एक पार्ट के बारे में जानने, such as population density, rainfall, forests, industries, mines, wildlife, railways, roads, etc. किसी एक पार्ट के ये स्पेशल फीचर्स जानने की जरूरत है. A thematic map deals with one or more of such themes. अब जो thematic map है उसमें ये सब mentioned होता है. Next comes the components of a map. Distance, direction and symbols are the essential components of a map. Map के essential components क्या हैं? Distance, directions and symbols. Fact to know, a legend is given
in one side or corner of a map. It includes different details such as symbols, scales, subject, etc. If you have seen a map, अगर मैप देखा हो आपने तो एक कॉर्नर में एक साइड पे क्या डिटेल्स दिए रहते हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, स्केल दिए रहते हैं और सब्जेक्ट दिया है. डिस्टेंस एंड स्केल. The scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. अब देखिए डिस्टेंस जो ग्राउंड पे होता है, जितना डिस्टेंस ग्राउंड पे है उतना तो मैप पे नहीं शो किया जा सकता है. तो जो मैप पे जो रेशियो वो एक रेशियो होता है. ओरिजिनल डिस्टेंस जो ग्राउंड पे होता है, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, और जो कि मैप पे दिखाया जाता है उसके बीच का रेशियो होता है. For example, if the distance between your school and your house is 8 kilometers, आपके स्कूल से आपके हाउस, आपके घर का अगर डिस्टेंस 8 kilometers है, this distance can be shown by 8 inches on a map. अब 8 kilometers तो आप ड्रॉ नहीं कर सकते ना, मैप तो छोटा सा होता है, पेपर छोटा होता है, किलोमीटर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो वहां पे 8 inches से दिखाया जाता है मैप. It simply means that 1 inch on the map represents 1 kilometer. इसका मतलब क्या हुआ? 8 inches का मतलब 1 किलोमीटर को 1 inch को 1 किलोमीटर से represent किया गया. 1 inch represents 1 kilometer on the ground. Depending on the size of a map and the actual ground area, different ratios can be used in a map. So 1 centimeter can be used to show 1 kilometer. 1 centimeter भी use कर सकते हैं 1 kilometer दिखाने के लिए, 10 kilometers और 100 kilometers, और even larger ground area, और भी बड़ा ground area अगर है तो उसको as 1 centimeter दिखाया जा सकता है. A scale is shown on a map. मैप में एक साइड में स्केल बना हुआ होता है. It can be given in the bottom of the map. Generally 3 types of scales are used to show distance. अब मैप पे जो स्केल बना होता है वो जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. लीनियर स्केल. इन दिस अ लाइन इज यूज्ड टू शो डिस्टेंस. एक लाइन यूज किया जाता है डिस्टेंस शो करने. दिस इज लीनियर स्केल. स्टेटमेंट. अ स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू शो डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. जो जिस भी यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको वैसे ही इसको लिखा जाता है. या तो 1 इंच को 1 किलोमीटर दिखाया जाता है, या 1 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर दिखाया जाता है. Now representative fraction. This is the third type of scale used. This shows the ratio between the map distance and the ground distance. Ground distance और map distance के बीच का जो ratio होता है वो दिखाता है. कौन सा? representative fraction. It always uses 1 as the numerator. Numerator 1 ही होता है उसका, हमेशा 1 ही यूज किया जाता है. For example, 1 upon 1 lakh or 1 upon 1, like this. Fine. It means that 1 is equal to the ground distance in the same units of measurement. For example, 1 centimeter on the map is equal to 1 lakh centimeter on the ground. Fine. Scales can be classified as small scale or large scale. A small scale uses a small measurement for a large ground area. जो small scale होता है वो एक छोटा measurement use करता है बड़े ground area के लिए. For example, 1 centimeter is equal to 1 kilometer or 1000 kilometer. While a large scale, अब जो large scale होता है उसमें क्या होता है? Uses a large scale for a small ground area. बड़ा scale use होता है लेकिन छोटे ground area के लिए. For example, 1 centimeter is equal to 100 meter or 10 meters. मीटर छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है. तो 1 centimeter को 100 meter शो किया गया. Okay? So a small scale is used in a map showing a very large area, while a large scale is used in a map to show the small area as that of a town or a village. Now directions. Directions are the path which indicates where to go. डायरेक्शन मतलब क्या होता है? दिशा. डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? दिशा. अब वो दिशा बताता है आपको कि किस तरफ जाना है. There are 4 main directions called cardinal directions. 4 directions है जिनको cardinal directions बोला जाता है. The north direction is to the top. The south direction bottom. The east direction is to the
right. आपका जो right है वो east है and the west direction is to the left. A compass is the best means to ascertain directions. एक compass पहले use किया जाता था, sea में भी जब जाते थे तो compass का use होता था directions दिखाने के लिए. Its red needle always points to the north direction. उसका एक red needle होता है जो कि हमेशा ही वो north direction की तरफ point out करता है. The intermediary directions where two directions converge are called ordinal directions. They are northeast, दो directions जहाँ converge होते हैं. They are northeast, southeast, northwest, southwest. Fine? Now, fact to know. A compass is called a mariner's compass because it was mostly used by seamen during their voyages. इस कंपास को अभी आपको जैसे बताया मैंने सी में ज्यादा यूज किया जाता था, सी में ज्यादा यूज करते थे. Now comes the symbols. A map can be used to show a wide variety of features as buildings, roads, railways, towns, bridges, trees, fields, hills, rivers, ponds and many more. बहुत सारी चीजें मैप पे शो की जा सकती. In order to depict them precisely, a number of symbols, letters, lines and colors are used. अब इसको ड्रॉ तो नहीं कर सकते ना, तो उसकी जगह symbols यूज किए जाते हैं. These help to show a lot of information on the limited space on a map. क्योंकि मैप में बहुत कम स्पेस होता है, लिमिटेड स्पेस होता है, वहां पे आपको शो करना होता है, तो उसके लिए symbols का यूज किया जाता है. These symbols and colors are universal in nature. वो हर जगह के लिए सेम होते हैं. These symbols are called conventional symbols. Some of the conventional symbols used are given below. लेकिन ये है कुछ conventional symbols जो कि हर जगह के लिए universal same है. Metal road, इसको double bar से दिखाया जाता है. Then international boundaries shown like this. Unmetal road like this. State boundary, ये symbol है. Broad gauge railway line. This is the symbol. District boundary, this is the symbol. Then meter gauge, railway line, this. Railway station, this. Capital is shown by this symbol and town is shown by this symbol. Okay, children? Go through it again. अच्छे से read कीजिएगा इसको फिर से. अब देखिए और भी symbols. River के लिए. Then well, tank, canal, bridge, temple, mosque, chhatri. Post office, post and telegraph office, PTO. For post office, PO. Police station, PS. Forest, जैसे trees बनी होते हैं. Village, oil well and battlefield, gun बना हुआ. Okay? जहाँ जहाँ जो जो जगह हैं वहाँ इन symbols का use किया जाए. Now, how to read a map? एक map को read कैसे करना चाहिए? You have studied the three components of a map. तीन components कौन से थे map के? Distance, direction and symbols. Okay? These features along with the title are given on a map. एक map पे ये features एक title के साथ दिए जाते हैं. The title and components of a map can be given on it in the available place. These should be used to read a map. इसी से map को read किया जाता है. Now sketch. A sketch is mainly based on observation and memory and has no scale. जो sketch बनाया जाता है इसको एक observation या अपनी memory से ही बनाया जाता है. इसमें कोई scale use नहीं. It is used to roughly guide a person about the route. किसी को अगर रूट बताना है आपको, आपने रफ एक स्केच बना के दिखा दिया कि यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ पे ये आता है, यहाँ पे ये आता है, तो दिस इज नोन एज अ स्केच. Your mother can guide you by word of mouth, or in the alternative, she can draw a rough sketch on a sheet of paper to locate a particular place. मान लीजिए आपको कहीं आपके पेरेंट्स ने भेजा या आपकी मदर ने बोला कहीं से कुछ लाने के लिए, and you don't know the place, तो क्या होगा? आपकी मदर क्या करेंगी? या तो समझाएंगे आपको वर्बली, या आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो वो रफ एक स्केच बना के दिखाएंगे. यू हैव टू गो दिस वे, उसके बाद यहाँ राइट मुड़ना है, वहाँ पे एक ऐसी शॉप आएगी, फिर वहां से लेफ्ट जाना है आपको. सो दिस इज अ स्केच, रफ स्केच. द डिस्टेंस ऑन दिस स्केच विल नॉट बी टू स्केल and any symbols can be used as per convenience. अपने convenience के हिसाब से कैसा भी symbol use किया जा सकता है. Now देखिए ये sketch,
दिस इज अ स्केच. यहाँ रोड है, यहाँ पे मार्केट है, यहाँ हाउसेस है, पुलिस स्टेशन है, these are houses, gardens, school houses. Okay, this is a plan. Now a plan, we'll read about a plan. ये तो हो गया sketch. अब plan में क्या? A plan is used to depict a small area on a large scale. एक बड़े स्केल पे एक छोटे से एरिया को डिपिक्ट करता है प्लान. The plan of a house or building can contain a lot of information, including the size of rooms, stairs, windows, doors, balconies, bathrooms, kitchen, etc. When such minute details are given on a map, it is called a plan. अब जैसे अगर घर बनाना है तो घर बनाने के लिए पहले एक प्लान बनाया जाता है. उसमें क्या होता है कि कहाँ पे किस साइड पे किचन होगा, किस साइड पे बेडरूम होगा, कहाँ पे कितने बेडरूम्स होंगे, देन लॉबी कितना कहाँ होगा, किचन कहाँ होगी, वॉशरूम कहाँ होगा, एंड उसके साइजेस भी मेंशन होते हैं, कितने बाय कितने का होगा, एंड वेयर द लॉन विल बी, कहाँ से मेन गेट होगा. सो दिस इज अ प्लान. और ऐसा ही जब ये माइन्यूट डिटेल्स, ऐसी ही माइन्यूट डिटेल्स जब मैप पे दी जाती है तो उसे कहा जाता है प्लान. नाउ चिल्ड्रन, क्या पढ़ा अभी हमने इस चैप्टर में? किसके बारे में पढ़ा? मैप के बारे में. तो लेट्स रीड आउट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स व्हिच वी हैव रेड जस्ट नाउ. A map is a drawing on a flat surface representing the whole or a part of the earth. Three types of maps are generally used. कौन से three types हैं maps के? Physical maps, political maps and thematic maps. Then three components of a map are distance, direction and symbols. A scale is used to show ground area on a map in a ratio. Then the four cardinal directions. कौन से हैं? East, west, north and south. Symbols and colors are used on a map to show different features. And lastly, a sketch is a rough drawing of part of the earth, while a plan is an accurate drawing with minute details. स्केच जो है वो एक रफ ड्राइंग है और जो प्लान है वो एक्यूरेट ड्राइंग है जिसमें कि मेजरमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, माइन्यूट डिटेल्स भी दी जा सकती है. फाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज हियर. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. टिक द राइट ऑप्शन. एटलस इज अ बुक ऑफ. एटलस क्या होती है? किस चीज की बुक होती है? पिक्चर्स, मैप्स, सिंबल्स एंड साइंस. इट इज अ बुक ऑफ मैप्स. The three essential components of a map are distance, dash and dash, directions, symbols or both of these. क्योंकि जो three essential components हैं मैप के वो है distance, directions and symbols. A small scale is used in a map showing a very dash area. Very small, large, none of these. Very large area. Small scale use किया जाता है large area show करने के लिए. Sketch is mainly based on observation and dash. Sketch किस पे based होता है? एक तो observation पे based होता है, दूसरा distance, area, memory. It is based on memory. To build a house, one would need a map, sketch, plan. एक घर build up करने के लिए सबसे पहले क्या चीज जरूरत होती है? Plan की. So we take plan. So now children, fill in the blanks here. A dash can be used to show a wide variety of features. So a symbol can be used to show wide variety of features. The four main directions are called cardinal directions. They are known as cardinal directions. Fine. A dash is used to depict a small area on a large scale. Small area on a large scale. What is used? A plan is used to depict small area on a large scale. A dash is the best means to ascertain directions. Compass. It's a compass. Then a dash is mainly based on observation and memory. Observation and memory पे क्या based होता है? Sketch. S-K-E-T-C-H. Now write T for true and F for false. A political map can show rainfall, population, wildlife, etc. Is it so? No. This is false. 1 centimeter is equal to 1000 kilometer is a large scale. Yes, this is a large scale, true.
Southeast is a cardinal point. Yes, this is true. A sketch requires a scale. No, this is false. Okay, children. So, this was the end of our chapter, and I hope you have very well understood this chapter and you enjoyed this chapter. So, stay tuned for the new video. We'll meet again with a new chapter. Till then, stay blessed. Have a wonderful time. Bye.